everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we are going to make this beautiful flower. So this is the flower and when we add the leaves this is how it looks. ये देखिए आज ये सुंदर सा फ्लावर बनाएंगे हम. ये फ्लावर है और जब हम इसमें लीव्स लगा देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है. तो आप ऐसे भी रख सकते हैं और लीव्स लगाने के बाद ऐसे भी रख सकते हैं. तो ये इस तरीके से लगेगा. देखिए. So let's get started. We'll start by making a magic circle first. सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे. तो यान को अपनी 2 फिंगर्स पे ऐसे क्रॉस की तरह लपेटेंगे. We'll make a cross on our 2 fingers. Take the crochet hook, put it under the first loop and pull the second loop and twist the needle. Slide it off your fingers and chain 1 to secure. तो जब आपका मैजिक सर्कल बन जाए उसके बाद आपने 3 चेन बनानी है. चेन 3, 1, 2, 3 and make 15 double crochet stitches in the magic circle. So this chain 3 will count as our first double crochet stitch and we'll make 15 more, so we'll have a total of 16 double crochet stitches. तो हम इसमें 15 double crochet stitches बनाएंगे. ये हमारा एक डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगा, प्लस हम 15 और बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 16 डबल क्रोशे स्टिचेस होंगी. तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. तो चेन 3 को काउंट करके हमारे पास अब 16 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं. सो आफ्टर काउंटिंग द चेन 3 वी हैव 16 डबल क्रोशे स्टिचेस. नाउ वील पुल द टेल एंड टाइटन द मैजिक सर्कल. तो मैजिक सर्कल को हम टाइट करके क्लोज कर देंगे. वी हैव क्लोज द मैजिक सर्कल. नाउ यू हैव टू गो ऑन टॉप ऑफ द चेन 3 एंड डू अ स्लिप स्टिच. तो जो चेन 3 हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसकी टॉप वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे. सो स्लिप स्टिच ऑन टू द थर्ड चेन and this completes your round 1. Now for the next round, chain 3, 1, 2, 3 and hold it with your thumb, the third chain, because now we have to work in this chain. तो इस chain में हमको work करना है तो आप अपना thumb रख लीजिए इस chain के ऊपर. Now make 6 more chains. 6 और chains बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now where we have kept our thumb in the third chain, we'll make a double crochet stitch there. तो इस वाली थर्ड चेन में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. और एक डबल क्रोशे स्टिच इस वाली स्टिच में बनाएंगे जहां हमने स्लिप स्टिच किया था. तो इन द स्टिच वेयर वी डिड अ स्लिप स्टिच एंड वी स्टार्टेड द चेन 3, वील मेक अ डबल क्रोशे स्टिच देयर. Now skip one stitch, go into the next one, make a double crochet stitch. एक stitch को हम skip कर रहे हैं, next वाली में एक double crochet stitch बनाएंगे. And keep your thumb here. You can see these 2 loops. We'll have to work in them. Chain 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and a double crochet stitch in these 2 loops. ये जो 2 loops हैं यहाँ पे इनमें हम double crochet stitch बनाएंगे एक. And 1 double crochet stitch in the stitch where we started. तो इस वाली में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. ये देखिए. फिर से हम एक स्टिच को स्किप करेंगे. स्किप 1 स्टिच, गो इनटू द नेक्स्ट वन, मेक अ डबल क्रोशे स्टिच. और इसी वाली जो ये देखिए 2 डबल क्रोशे स्टिच एक ही स्टिच से निकल रहे हैं. जो जहाँ हम फर्स्ट बनाते हैं लास्ट वाला भी फिर हम इसी में बनाते हैं.
और ये जो 2 लूप्स हैं इनमें भी हमने वर्क करना है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है. So 1 double crochet stitch, then chain 6, 1 2 3 4 5 6, 1 double crochet stitch in these 2 loops, and 1 double crochet stitch in the stitch where we have made a double crochet stitch. इसी सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. Then again skip 1 stitch, go into the next one, make a double crochet stitch. See these 2 loops, we have to work in them now. Chain 6, 3 4 5 6, and a double crochet stitch in these 2 loops, and 1 double crochet stitch in the stitch below in the same stitch. Then again skip 1 stitch, go into the next one, make a double crochet stitch, chain 6, 1 2 3 4 5 6, a double crochet stitch in these 2 loops, in 2 loops में एक double crochet stitch बनाएंगे, and 1 double crochet stitch in the stitch where we have made a double crochet stitch. तो इसी stitch में एक और double crochet stitch बनाएंगे. And this is how we have to complete this round. Skip 1 stitch, go into the next one, make a double crochet stitch, एक double crochet stitch बनाएंगे, एक stitch को skip करके next वाली में, chain 6, 1 2 3 4 5 6, 6 chains बनाएंगे, एक double crochet stitch इन 2 loops में करेंगे, 1 double crochet stitch in these 2 loops, and 1 double crochet stitch in the stitch below. एक डबल क्रोशे स्टिच इस वाली स्टिच में जहाँ पे हमने एक बनाया था वहीं पे. फिर से एक को स्किप करेंगे, सेकेंड वाले में जाएंगे, स्किप 1, गो इनटू द नेक्स्ट, मेक अ डबल क्रोशे स्टिच, चेन 6, 1 2 3 4 5 6, मेक अ डबल क्रोशे स्टिच इन दीज 2 लूप्स, and 1 double crochet stitch in the stitch here. Then again skip 1 stitch, go into the next one, make a double crochet stitch, chain 6, 3 4 5 6, double crochet stitch in these 2 loops, and a double crochet stitch in the stitch from where we have done a double crochet stitch in the seam. So we must have a total of 8 loops, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now slip stitch onto the third chain here. At the beginning we made 3 chains, at the third one we have to slip stitch. तो third वाली chain पे हम slip stitch कर देंगे और ये वाला round हमारा हो जाएगा complete. So this completes our round 2. Now let's begin with our next round, round 3. Round 3 start करेंगे. Now before starting round 3, I'd like to show you. You can see there's a, one second, you can see this stitch here, this V stitch here, and then this loop coming up. ये देख सकते हैं आप, ये एक स्टिच इधर है, फिर ये V स्टिच है और ये लूप है. तो पहले हमने यहाँ पे वर्क करना है. फर्स्ट वी हैव टू वर्क इन दिस stitch over here, then we have to work in this side of the V stitch, then we have to work in this side of the V stitch, and then we have to work on this loop. तो हमें इस तरीके से वर्क करना है. So when we work in this manner, we have a petal, a round petal, which will go like this way. See, it's going in this way. तो इस तरीके से हमारी पेटल्स बनेंगी जो इस तरीके से ऐसे घूम के जाएंगी, और वो तभी जाएंगी जब हम इस तरीके से वर्क करेंगे, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और फिर ये पीछे वाले में. तो सबसे पहले हमें इसमें वर्क करना है. वी हैव टू वर्क इन दिस, सो विल स्लिप स्टिच देयर फर्स्ट, we'll go in this stitch here and we'll do a slip stitch, then chain 3 करेंगे, 1 2 3. this counts as our first double crochet stitch. ये हमारा पहला double crochet stitch की तरह count होगा. we have to make 4 more, so we'll have a total of 5. so this is the second one,
2, 3 double crochet stitches, 4 and 5. So the chain 3 is our first double crochet stitch, and we have made 4 more, so we have a total of 5 double crochet stitches now. See the loop behind, I have not working in that, I just worked in the stitch. Now we have to work in the V stitch. So first this side of the V stitch, तो पहले ये वाली side V stitch के हम work करेंगे. We'll make 3 double crochet stitches in this side of the V stitch. इस side पे हम 3 double crochet stitches बनाएंगे. 1, 2, 3. Then rotate the flower and we'll work onto the other side of the V stitch. फ्लावर को थोड़ा रोटेट करके जो दूसरी साइड है वी स्टिच की उसमें 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. वील वर्क 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द अदर साइड ऑफ द वी स्टिच. 2 and 3. Now rotate the flower again. You can see it's already started to curl, and now we have to work in the loop that is behind. We have to work 6 double crochet stitches first. पहले 6 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now these 2 loops, just put a thumb over here because we have to work in that for the picot. इसमें हमने work करना है picot के लिए. Chain 3, 1, 2, 3 and slip stitch in these 2 loops. This will form a picot. इससे हमारा एक picot बनकर तैयार हो जाएगा. Slip stitch करना है उन 2 loops में, and then again 6 double crochet stitch in the same loop here. तो 6 और double crochet stitches बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और ये देखिए आपका एक पेटल बनकर तैयार हो गया है. 1 petal is ready. देखिए इस तरीके से बनकर आपका एक पेटल तैयार हो गया है. इसी तरीके से हमने बाकी भी बनाने हैं. टोटल हमारे पास 8 petals होंगे और जब ये फ्लावर बन जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा. सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पेटल. नेक्स्ट पेटल बनाते हैं. इसी तरीके से हमने वर्क करना है. तो जो बैक लूप है इसको हम छोड़ देंगे. ये वाली जो स्टिच है पहले हमने इसमें वर्क करना है, तो हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे. स्लिप स्टिच इन दिस स्टिच हियर. चेन 3, 1, 2, 3, 4 more double crochet stitches. 1, 2, 3 and 4. And the chain 3 counts as our double crochet stitch, so we have a total of 5 double crochet stitches. Now we have to work in the left side of the V stitch. Left side V stitch के left side पे हम काम करेंगे. 3 double crochet stitches बनाएंगे. We'll make 3 double crochet stitches here onto the left side of the V stitch. 2 and 3. Then we'll rotate our flower and we'll work onto the right side of the V stitch. We'll work 3 double crochet stitches here. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे यहाँ पर भी दूसरे साइड वी स्टिच के. 2 and 3. देन रोटेट द फ्लावर अगेन. फिर से फ्लावर को हम रोटेट करेंगे और एक ही डायरेक्शन में हमने रोटेट करना है. अगर हम पहले ऐसे और फिर दोबारा ऐसे रोटेट करेंगे तो गलत बनेगा. यू हैव टू रोटेट इन वन डायरेक्शन. नाउ वी हैव टू वर्क इन द लूप. सो वील वर्क 6 डबल क्रोशे स्टिचेस. अब हम ये वाले पीछे वाली लूप में वर्क कर रहे हैं. 6 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे पहले. 2, 3, 4, 5, 6. And when you're doing the 6th one, just hold it with your thumb because these 2 loops we have to work the picot in. So we have to work the picot here. तो ये पीको हमने करना है, तो यहाँ पे जब भी आप 6th वाला डबल क्रोशे स्टिच करेंगे तो आप थंब रख लेंगे तो आपके लिए इजी होगा. चेन 3, स्लिप स्टिच इन दीज 2 लूप्स. ये 2 लूप्स में हम स्लिप स्टिच करेंगे तो हमारा पीको बन जाएगा. सो आवर पीको इज़ रेडी. नाउ 6 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इन द लूप. 1, 6 और डबल क्रोशे स्टिच इसी लूप में करेंगे हम. 2, 3
3, 4, 5 and 6, and our second petal is also ready. दूसरी पेटल भी बनकर हमारी तैयार होगी. इसी तरीके से हमने बाकी सारी पेटल्स बनानी है. This is the way you have to make all the petals. So make sure you work in the correct direction. First in the stitch here, then left side of the V stitch, right side of the V stitch, and then the loop which is behind. इस तरीके से हमने वर्क करना है. पहले ये वाली स्टिच में वर्क करेंगे, फिर ये देखिए पहले ये वाली स्टिच में वर्क करेंगे, फिर लेफ्ट साइड वी स्टिच के पे वर्क करेंगे. यहाँ पे चेन 3 करके 4 डबल क्रोशे स्टिचेस, देन 3 double crochet stitches, 3 double crochet stitches here, and 6 double crochet stitches, a picot, and 6 double crochet stitches. So a total of 12 double crochet stitches with a picot in the middle. So this is how we have to work all the petals, and once I complete it then I'll show you how it looks. मैं एक बारी complete करके फिर आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है. इसी तरीके से आप भी सारी petals बना लीजिएगा. देखिए मैंने सारे petals बना लिए हैं. I've made all the petals. Now once you finish making all the 8 petals, what you have to do is you have to slip stitch in the space here. ये जो space है यहाँ पे हमने slip stitch करना है. So we'll go in and make a slip stitch. तो यहाँ पे हमने कर लिया है slip stitch, and your flower is ready. If you like the flower this way, अगर आपको ऐसा flower पसंद है, so what you have to do is just chain one and fasten off, and your flower will be ready. But if you want to add in leaves, अगर आपको leaves add in करनी है तो you'll have to make loops behind to make the leaves, and then you have to make the leaves. So you'll have 2 more rows for that. So if you want to leave the flower like this, you can add a pearl in the middle and you can just leave it like that. It looks really pretty as it is, but if you want it to be more beautiful, you can add in leaves as well. तो अगर आपको चाहिए कि आपका फ्लावर आपको ऐसे ही पसंद आ रहा है तो आप बीच में पर्ल लगा के मोती लगा के इसे ऐसे भी रख सकते हैं. नहीं तो अगर आप चाहते हैं लीव्स लगाना तो उसके लिए 2 और रोज़ आपको करनी पड़ेंगी. एक जिसमें हम पीछे लीव्स के लिए लूप्स बनाएंगे, और फिर जो सेकेंड राउंड होगा उसका वो ग्रीन कलर से हम लीव्स बनाएंगे. तो मैं आपको दिखा देती हूँ लूप्स कैसे बनाने हैं. आप चाहे तो ऐसा भी फ्लावर रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो लीव्स भी बना सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. यू कैन जस्ट लीव द फ्लावर एज इट इज़, और यू वांट यू कैन मेक द लीव्स एज वेल. सो फॉर द लीव्स व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वी हैव टू चेन 3. सबसे पहले हम चेन 3 करेंगे, 1 2 3, एंड वी हैव टू स्लिप स्टिच इन द प्लेस हियर वेयर देयर इज अ पीको. Here below that we have a stitch here. We have to insert our needle from behind, and then from down we have to take it backwards, and we have to do a slip stitch. Then chain 6, 1 2 3 4 5 6. Go on to the next petal. Next petal पे जाएंगे. वैसे ही सेंटर में जो स्पेस है we'll insert the needle from behind. पीछे से needle डालेंगे उस space में और नीचे से पीछे की तरफ लेते हुए जाएंगे. From down we'll take it behind and we'll do a slip stitch. Then again chain 6, sorry, 1 2 3 4 5 6. Go on to the next petal. Next petal पे जाएंगे. फिर से center के जो space है पीछे से needle insert करेंगे. We'll insert our needle from behind, bring it down and take it from behind, take it from back like this. नीचे से पीछे की तरफ ले जाएंगे. फिर से स्लिप स्टिच करेंगे. फिर से चेन 6, 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट पेटल पे उसी तरीके से पीछे से नीडल को इंसर्ट करेंगे. विल इंसर्ट आवर नीडल फ्रॉम अ हुक फ्रॉम बिहाइंड, ब्रिंग इट डाउन एंड गो आउट टू द बैक. नीचे से जाके पीछे की तरफ ले जाएंगे. फिर से चेन 6, 1 2 3 4 5 6. Next petal, insert from behind, take it from down and back. Chain 6, 1 2 3 4 5 6. Next petal, take the needle from behind, go down and back, slip stitch. Then again chain 6, 1 2 3 4 5 6. Next petal, take the crochet hook from behind, go down and back, slip stitch.
देन अगेन चेन 6, फिर से चेन 6 करेंगे, 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट पेटल पे जाएंगे, इंसर्ट द हुक फ्रॉम बिहाइंड, ब्रिंग इट डाउन एंड बैक, स्लिप स्टिच. नाउ वी हैव रीच्ड द प्लेस फ्रॉम वेयर वी डिड द चेन 3. तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इग्नोर द चेन 3 एंड chain 6, 1 2 3 4 5 6, and go on to the next petal, put the crochet hook from behind, bring it down and back and do a slip stitch, and then chain 1 and fasten off. chain 1 करके हम fasten off कर देंगे, because अब हम ग्रीन कलर से अपनी लीव्स बनाएंगे. आप कोई भी कलर से बना सकते हैं, और चाहे तो इस कलर से भी आगे का और पार्ट बना सकते हैं लीव्स का, बट अगर आप ग्रीन कलर या कोई दूसरा कलर यूज़ करेंगे तो और भी खूबसूरत बन के आएगा. सो ये देख सकते हैं आप, ये पीछे का हिस्सा है. दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द फ्लावर एंड दीज आर द लूप्स फ्रॉम वेयर वील मेक द लीव्स. सो दिस इज़ द फ्रंट पार्ट. यू कैन जस्ट मेक इट प्रॉपर, जस्ट स्ट्रेच इट अ बिट, बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग वी जस्ट tend to curl it. This is how it's looking now. Now let's begin with the leaves. So leaves banana start karte hain. For the leaf I'm going to attach the green color attach करने वाली हूँ यहाँ पे. So we'll make a slip knot बनाएंगे पहले, and अब इसको जो हमने पीछे ये 6 चेन से लूप्स बनाई थी, the loops that we have made with 6 chains at the back, you can attach to any one of the 6 chain loop. So किसी भी एक loop में हम इसे attach कर देंगे. We'll attach the yarn with the help of a slip stitch. Now make a single crochet stitch in the 6 chain space. यहाँ पे पहले एक single crochet stitch बनाएंगे, then chain 1, then make 4 double crochet stitches in this space. 4 double crochet stitches बनाएंगे, 1 2 3 4. अब एक treble crochet stitch बनाएंगे. We'll make a treble crochet stitch. For that you have to yarn over twice, go in the space, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. Now chain 3, 1 2 3, and make a slip stitch in these 2 loops. So we have to make a picot here. You made the picot. Now make another treble crochet stitch. फिर से एक treble crochet stitch बनाएंगे, then make 4 double crochet stitches. 4 double crochet stitches बनाएंगे, 1 2 3 and 4. Now make a single crochet stitch and a slip stitch in the same space, and I'm working over the yarn tail so that I don't have to sew in at the end, and it will be secure enough. So this is the leaf. The leaf is ready, you can see, and this is how we have to make the other leaves as well. बाकी leaves भी इसी तरीके से हमने बनानी है. Now slip stitch on to the next chain 6 space. ये जो next chain 6 space है उसमें slip stitch करेंगे. Make a single crochet stitch. एक single crochet stitch बनाएंगे. Now make 4 double crochet stitches. 4 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 3 4.
1 treble crochet stitch, yarn over twice, pull through 2, pull through 2 and pull through 2. Then chain 3, 1 2 3, make a picot बनाएंगे. Then again make a treble crochet stitch बनाएंगे. अब 4 double crochet stitches बनाएंगे. You have to make 4 double crochet stitches. 1 2 3 4. Now a single crochet stitch बनाएंगे and a slip stitch in the same space. Now slip stitch onto the next chain 6 space and repeat this pattern until you complete all the leaves. जब सारी leaves finish हो जाए तब तक आपने इस pattern को repeat करते जाना है और ये देखिए इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा. So you just keep repeating this pattern until you reach the last chain 6 space and you have to make all the leaves on the chain 6 spaces. So I'll finish this and then meet you back here. This is how it's looking after completing all the leaves. सारी leaves complete करने के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है. And when you complete your last leaf, जब last leaf आप कर लेंगे, you have to just go into the next chain 6 space from where the first leaf is starting and do a slip stitch. तो जहाँ पे हमने पहली leaf बनाई थी उस वाले chain 6 space में जाके हम एक slip stitch कर लेंगे and then chain 1 and fasten off. chain 1 करके हम fasten off कर लेंगे. फिर एक tapestry needle की मदद से इसे हम weave in कर देंगे. So we can just weave in using a tapestry needle. So these two yarn ends I'll weave in using a tapestry needle. You can just go in couple of stitches and make sure that it's secure enough and it won't come out. थोड़ी सी stitches के बीच में से जाएंगे. एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे. इसी तरीके से ये रेड वाला भी ऐसे ही वीव इन कर देंगे. विल वीव इन दिस एज वेल. I'll just go in a couple of times and make sure you always weave in at the back side of the work. जो भी आपका वर्क है उसके बैक साइड पे ही हमेशा वीव इन करना है. An extra yarn can be just trimmed and this is it. The flower is ready. ये देखिए फ्लावर बन के रेडी हो गया है. बस एक बार जब ये पूरा फ्लावर बन जाए तो आप इसे बराबर शेप दे सकते हैं क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो हम इसको एकदम से ऐसे क्रश कर देते हैं तो उससे उसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाती है. सो यू कैन जस्ट मेक द लीव्स एंड द पेटल्स स्ट्रेट बिकॉज व्हेन वी वर्क वी जस्ट टेंड टू क्रश इट and this is how it looks. This is the final look. I hope you all liked it. You can also leave the flower as it is if you don't want to make the petals. आप ऐसे भी रख सकते हैं फ्लावर को. अगर आपको petals नहीं बनानी है तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी बहुत सुंदर लगेगा. And you want, you can even add a pearl in the center. That will also give a very nice look. I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.